Dear students, welcome to Insight Academy. I hope all of you have given prelims test paper this time, and by this time all of you have reached your home. एग्ज़ाम होने के बाद सबसे बड़ी उत्सुकता बच्चों के मन में होती है, एग्ज़ाम कैसा हुआ, कट ऑफ कितना होगा, क्या मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. So all these questions we will discuss in today's session so that you have a fair idea whether you are going to write main exam or not. So let us start today's session with your analysis. And एक बात ध्यान में रखनी है यहाँ पर, इस एनालिसिस का पर्पस ये नहीं है कि आपको एक गारंटी से कह दें कि आपका नहीं हो पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव हियर. आपको डिमोरलाइज नहीं होना है बिकॉज एग्जैक्टली कट ऑफ क्या है किसी को पता नहीं है. दिस इज़ अ फेयर आइडिया विच आई विल ट्राई टू गिव यू. दिस इज़ नॉट अ प्रिडिक्शन ऑफ एनीथिंग. और आप सब लोग भी अब कमेंट सेक्शन में जाकर नीचे अपना बताएं कि कट ऑफ आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, पेपर कैसा रहा. यहाँ पर मैं अपना व्यू शेयर करूँगा और कमेंट सेक्शन में जाकर आप भी अपना व्यू शेयर करें सो दैट हम देख पाएँ कि आपका हमारा व्यू कितना मैच करता है, कितना मैच नहीं कर सकता है. हो सकता है कि आपको हमसे भी ज़्यादा इसका आइडिया हो. सो जस्ट शेयर योर व्यू in comment section. Write your view whether you like or even if you dislike it, just share your view. You have a right to like or dislike. So let's start. ट्रेंड कैसा था इस बार? क्या ये हर साल के बराबर था या कुछ डिफरेंट रहा? अगर आप ट्रेंड की बात करें, सो दिस ईयर ट्रेंड पहले सालों से काफ़ी डिफरेंट था. मुझे लगभग 22-23 साल हो गया सिविल सर्विसेज कोचिंग से जुड़े हुए, और इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतने मिक्स या डाइवर्स क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे. ऐसा नहीं है कि नहीं 20-22-25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आ गया हो. कभी पॉलिटी से 28 क्वेश्चन आ जाते थे, कभी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से 30-35 क्वेश्चन आए हैं पहले, हिस्ट्री कल्चर से भी 20-25-28 क्वेश्चन पहले आ जाते थे. लेकिन इस बार डाइवर्स काफ़ी ज़्यादा है. तो यहाँ पर जो मिक्स ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ही हाई क्वालिटी रहा, और इस मिक्स ऑफ क्वेश्चंस ने बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी पैदा की है. काफ़ी बच्चों से बात की मैंने आज इस सेशन को रिकॉर्ड करने से पहले, एंड आई फाउंड दैट some students were saying it was very easy, some were saying it was difficult, and some were saying it was very difficult. My understanding says that paper was quite difficult, little difficult than the previous years. कुछ क्वेश्चंस बड़े आसान थे, चाहे वो हिस्ट्री कल्चर के हो, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं. सो मिक्स ऑफ क्वेश्चंस पर्टिकुलरली आप देख पाएंगे यहाँ पर जी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए. 6-7 क्वेश्चन इस बार आए हैं जी के रिलेटेड. यूनिफॉर्म से रिलेटेड है, चाहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड है, चाहे फ्लैग से रिलेटेड है. सो ये जी के रिलेटेड क्वेश्चंस है. जिसने इंडिया ईयर बुक पढ़ा है उसको ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान होंगे, बिकॉज इस तरह के जी के रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली इंडिया ईयर बुक में काफ़ी मिल जाते हैं. एंड देन यू हैव करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस. करंट अफेयर्स चाहे वो नेशनल इश्यूज़ हो, चाहे इंटरनेशनल इश्यूज़ हो, जोग्राफिकल लोकेशन हो, अज़रबैजान अर्मेनिया का युद्ध हो, चाहे वो सोमालिया का फेमीन एंड सिविल स्ट्राइफ हो, चाहे वो कॉन्गो वैली से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, चाहे वो चेस वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चंस हो. सो काफ़ी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड है. तो जिन बच्चों ने करंट अफेयर्स को अच्छी तरह पढ़ा है, न्यूज़पेपर अच्छी तरह फॉलो किया है, पर्टिकुलरली द हाई क्वालिटी न्यूज़पेपर्स लाइक हिंदू, लाइक इंडियन एक्सप्रेस, लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, लाइक बिजनेस स्टैंडर्ड, तो जिन्होंने ये पेपर पढ़े होंगे उनके लिए करंट अफेयर्स काफ़ी आसान रहा होगा. सो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए. पढ़ाई है, आप लोगों ने मेहनत करते हैं सभी बच्चे. एंड देन क्वेश्चंस ट्रेडिशनल एरिया से भी है, हिस्ट्री कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस आर फ्रॉम ज्योग्राफी, क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनवायरमेंट इकोलॉजी, क्वेश्चंस आर फ्रॉम इकोनॉमी, क्वेश्चंस आर आल्सो फ्रॉम साइंस एंड टेक, एंड क्वेश्चंस आर आल्सो फ्रॉम पॉलिटी. तो इन सभी एरिया से काफ़ी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है. कुछ क्वेश्चंस बड़े सिंपल भी है, कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो अबव एवरेज डिफ़िकल्टी लेवल है उन क्वेश्चंस में इस बार संख्या काफ़ी ज़्यादा है. लेट अस सी द सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस. अगर आप हिस्ट्री कल्चर के देखें तो लगभग 18 क्वेश्चन. अब 18 में से कुछ बच्चों को लगेगा ये जैसे 15 ही आए हो, या कुछ को लगेगा, कुछ इंस्टीट्यूट कहेंगे जैसे 21-22 या 23 आए हो. But at an average, you see some questions of polity can be classified into history culture. Some questions of even economy which are related to historical background can be classified into history culture. But you leave those extremes of both sides. If you take a mid view or a balanced approach,
you'll find there are around 18 questions from history culture. संगमेश से क्वेश्चंस है, जैनिज्म बुद्धिज्म से क्वेश्चन है, लिटरेचर से क्वेश्चन है, धान्य कटक ज्योग्राफी से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड भी धान्य कटक महासंघ कहाँ होता था, धान्य कटक और धरनी कोटा, इफ़ यू हैव रेड यू नो अमरावती और आंध्र प्रदेश. सो उस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं. देन यू लुक एट द ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस. ज्योग्राफी के लोकेशन से रिलेटेड है, मिनरल से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर सोयल से रिलेटेड है. देयर आर अराउंड 15 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी. एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस भी लगभग उतने ही हैं, 15 के आसपास. काफ़ी डाइवर्स है. इंटरनेशनल कन्वेंशन से क्वेश्चन है, एंडेंजर्ड वेराइटीज से क्वेश्चन है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे मर्सोपियल्स. सो ये सब इस बार पूछे गए हैं. इकोनॉमी का वेटेज भी काफ़ी अच्छा रहा एंड बहुत डाइवर्स है. इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल ट्रेड, शेयर, गोल्ड एक्सपोर्ट, स्विट्जरलैंड का वाला क्वेश्चन, तो काफ़ी डाइवर्स है यहाँ पर. बीटा, कुछ लोगों ने पढ़ा बेटा, हिंदी में लिख दिया बेटा. सो वो बीटा क्या होता है? बीटा मीन्स हाई बीटा, लो बीटा स्टॉक्स. जो फाइनेंस को फॉलो करते हैं, स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं, उनको पता है बीटा क्या होता है. बीटा इज़ अ वेरिएबिलिटी इंडेक्स. सो कितना वेरिएशन होता है, कितना फ्लक्चुएशन होता है, दैट इज इंडिकेटेड बाय बीटा. लेस देन 1 और मोर देन 1, 1 इज नॉर्मल. देन यू हैव साइंस एंड टेक रिलेटेड क्वेश्चंस. इस बार साइंस टेक का वेटेज काफ़ी कम हो गया. जनरली 17-18 क्वेश्चन साइंस टेक से आते थे, बट दिस टाइम इफ यू सी देयर आर ओनली अराउंड 8 क्वेश्चंस. कपल ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू मिसाइल टेक्नोलॉजी, कपल आर रिलेटेड टू बायोटेक. जनरल साइंस का कुछ भी नहीं है यहाँ पर. सो बायोटेक एंड मिसाइल डिफेंस वाला एरिया काफ़ी अच्छा है, स्पेस वाला एरिया है. Then you look at the polity constitution. Polity वाले questions भी relatively last years की तुलना में काफ़ी कम रहे. So they are just around 10, 12, 13 questions from polity constitution. Then you have questions from GK. So GK questions are around 6. Then you have questions related to current affairs. Current affairs, if you suppose see economy, current affairs can be counted in economy. Geography current affairs related to location can be counted in geography. Environment current affairs can be counted in environment. And over and above that, there will be again 10, 12 questions of current affairs, international relations और current GK. So ये सब मिला के आप देखेंगे GK के questions काफ़ी ज़्यादा रहे. 15-16 क्वेश्चन GK के हैं, करंट रिलेटेड, ट्रेडिशन रिलेटेड. वो सब प्रश्न इस बार ट्रेंड को काफ़ी बदल दिया है. सो एक बार में अगर आपने देखा है 10 क्वेश्चन हिस्ट्री कल्चर के पूछ दिया एक लाइन में, उसके बाद 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी पूछ दिया, उसके बाद 10 क्वेश्चन इकोनॉमी पूछ दिया, एंड देयर आर सब mix up here and there. 4-5 questions of history came later, then 2-3 also came up in between after polity and economy. So this is a trend and which is very different from the previous years, and ये change of trend, this change of trend makes the life difficult for students. लगता है पेपर काफ़ी easy है but easy नहीं है. डिफ़िकल्टी लेवल पिछले सालों की तुलना में कुछ ज़्यादा मुझे इस बार महसूस हुआ. आपको कैसा लगा? आप भी अपना व्यू नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, so that we can see where do we stand with respect to each other. Now कट ऑफ का क्या होने का उम्मीद है? कट ऑफ जब पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट है लास्ट ईयर से, तो कट ऑफ का चांस भी कुछ कम होना चाहिए. लास्ट ईयर कट ऑफ पिछले सालों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा रहा. इफ़ यू सी द कट ऑफ ऑफ लास्ट 5 years here for general category, so 18, 2019, 20, 21, 22, पहले 98 हुआ करता था, 2 साल लगातार 98 रहा, फिर 92 आ गया, फिर 97 आ गया. लेकिन इस बार थोड़ा 22 में थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा. इस बार कट ऑफ मुझे लगता है इससे थोड़ा कम होने की उम्मीद है. लुक एट द अदर कैटेगरीज. EWS वाला 90 था, फिर 77 हुआ, फिर 80 हुआ, 82. इस बार थोड़ा बड़ा था 2022 में. सिमिलरली आप देखें यहाँ पर OBC वाला कट ऑफ ये भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था. These are 5 years analysis. So EWS has only 4 years because this is 4-year-old stuff. Then you have SC category cutoff. Then you have ST category cutoff. So these categories witnessed little decline in cutoff last year, and other categories witnessed little increase in cutoff last year. So इन सबको ध्यान में रखते हुए you can have a fair idea how much is likely to be the cutoff this time. Because last time अगर cutoff आपका 88 था, तो इस बार मुझे लगता है कि 82 के आसपास में कट ऑफ का होना चाहिए. सो अगर आपका 80 भी है, अगर आपका 78 भी है, बिकॉज कपल ऑफ क्वेश्चंस प्लस माइनस एनीवे इट कैन हैपन. कई बार क्या होता है आपने किसी क्वेश्चन को रॉन्ग काउंट कर लिया और वो आपने राइट मार्क कर दिया था सर्कल बनाते समय वाइल फिलिंग योर OMR शीट. सो
If somebody is 78 and somebody is, let's say, 85, how many questions difference is there? One question carries 2 marks. If you take that wrong, it becomes 2.67. So 2.67, it's a matter of just 2 or 3 questions. So 2 question कम होने से, 2 question ज़्यादा होने से, life could change entirely. So anybody who is getting 78 around should consider himself in the range. 78 is not bad because couple of questions plus minus आंसर की मैचिंग में हो जाता है. हो सकता है कि 2 क्वेश्चन हमारे आंसर की में गलत हो, 2 क्वेश्चन किसी दूसरे के आंसर की में गलत हो. हर साल आप देखते हैं आंसर कीज issued by institutes are not foolproof. Every institute has problem. Sometimes to couple of questions, and some institutes put key very early, they end up putting 20 or 25 questions wrong, as was witnessed last year with many prominent names. So somebody who is getting 78 should not lose hope. Somebody who is getting 85 should consider himself definitely in the range, definitely in the race for main examination. So 78 to 85 वाले बच्चे अपना मेंस का तैयारी करना चाहिए. दिस इज जनरल कैटेगरी, बिकॉज जनरल कैटेगरी का सबसे ज़्यादा होता है. एंड इन द सेम रेशियो फ्रॉम जनरल कैटेगरी टू EWS और OBC और SC और ST यू कैन कैलकुलेट योर मार्क्स. सो उस रेफरेंस को लेते हुए आपका कट ऑफ मुझे लगता है लास्ट ईयर से थोड़ा सा इस बार कम रहेगा. पेपर का क्वालिटी थोड़ी डिफिकल्ट थी, क्वेश्चंस इजी भी लगे. लेट्स से पॉलिटी में पूछा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, 4 ऑप्शन दिए. ऑल द 4 ऑप्शंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. व्हाट इज द चीफ वैल्यू और चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? लगेगा बड़ा सिंपल है जी, कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑर्गेनिक लॉ, इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. बट ऑल द 4 ऑप्शंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. And if you have gone through civics book of class 6 and class 8, in both the classes, this issue of constitution has been dealt in great detail. So then you can see, okay, it is a source of authority of a state. It's a source of rights to the people. It is the basis of division of power among organs of government. It's a fundamental law of the land. And इन सब को use करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं. Very conceptually deep question. Due process again, आपको पता है मेन का गांधी केस 1978. And in that case, Supreme Court for the first time used the concept of due process of law. So due process talks about fairness. It has to be fair, just and reasonable. So वो सब चीज़ें अगर आपने पढ़ी है, आपका जो spectrum of studies रहा, wide रहा है, then you can find these questions easy. Otherwise, most of the students are going to falter in these conceptual questions. Similarly, history culture में आप देखें, question about suicide of kings in Sangam age, question about Dharni Kota, question about the names of ports, question about the Governor General of Bengal becoming Governor General of India. So all these questions might look very easy to some, but these are not that easy. Somebody who has studied things in depth, only they can mark these questions with 100% accuracy, and slight left and right pulls people down drastically. So first impression of the paper, when you have a look, you find it's easy. When you go through all the questions, you try to find the answers, you find out that the easy questions are not many. Easy questions are just around 25 to 28, which are easy, and this is how it happens every year. So these are very easy questions. Moderate questions are little less this time. Generally, moderate level of difficulty used to be equal, but this time it is just around, I think, around 18 to 20 questions. And those who are falling in quite high level, very difficult category, those questions are around 40. So that way you can just understand the paper is not easy. Don't take it to the heart that if you score less, because everyone is going to get lesser than last year. When they go and match their key, when they will find out each and every answer accurately, everyone will reach in the range of 75 to 85. Of course, some will score 95, some will score 100 also. Nobody scores 120 here. Those who match answers right. So अपना तैयारी शुरू कीजिए अपना मेंस का, and don't lose your heart, because cutoff fluctuation होता ही रहता है, and couple of questions plus minus अगर आपने कर दिया तो उससे चीज़ें काफ़ी बदल जाएगी. So expected cutoff this time for general category, I believe it is somewhere between 75 to 85. And if you are 78 around, 78 to 85, that's better. So this is a range. If you fall in this, just
shift your focus from prelims to mains and get ready for the main battle. Now, what's the way forward? After prelims examination, सबसे बड़ा dilemma होता है exhaustion का. You come, you get exhausted, and you start checking papers again and again. Invest today's time, one day, in looking for the answer key, in analyzing your performance in pre-T. Every day, do not sit with the same question paper and waste your time. Because at least 35 to 40% candidates ऐसे होते हैं जिनको मेंस लिखने का मौका मिलता है. They get convinced after a day or two that they are not going to get through. And when you get a call for mains, then by the time you have already missed out half of the time. So don't waste your time even for a single day in kind of doldrums or dilemma, whether you'll make it or you won't make it. Anybody who is around 78 to 85 is going to make it to the main exam. So pick up the books for the main exam. Get ready for the main battle here, because this is just a filtering first step. And if you need any help from our side, we are starting mains test series, we are starting prelims test series for next year, we are starting integrated test series. So if your score is very less, come and join us here for integrated pre-com mains test series. If your score is 78 to 85, come and join us here for mains test series. We are going to take you through all these exams. This time also, around 78, 79 questions came from our GS classes and test series. So dear students, if you need any help, just connect to us. Call us here, and we are going to help you in every possible way. And have faith. Keep working hard, because faith and hard work are the only key to success in civil services examination. Write your comment. How did you like the cutoff here? Write your comment, write your expected cutoff. What was your experience with the exam? कैसा था exam? Easy था, difficult था या moderate था? वो सब अपनी comment box में नीचे लिखिए. And we will try to connect with you, each of you. If you have any difficulty, you can share your difficulty related to preparation in comment box. Write your number and we'll call you, or you can call the number given on the website of Insight Academy here, and we will connect with you, each of you. It's not that whether you take admission here or you don't take admission here, anybody who is preparing for civil services, we believe, is our student. And we're going to help you up, whether you join here any course or even if you don't join any course. So all the best for your main exam. Those who are getting very less marks, don't lose heart. Civil services is a long battle, and the harder you work, the luckier you get. So get ready for the next year if performance is less, and if you are between 78 to 85, get ready for the main this year. All the best, dear student. God bless you.